जब मैं एकदम से एज अ टीनेजर शो मारने लगा था, नए नए जब आप इम्प्रेस करते हैं लड़कियों को या किसी को भी स्कूल में, सो हम्म। आई ट्राई टू कम अप विद अ नंबर, बट द ट्रूथ इज कि बहुत सारी ट्रिप्स तस्वीरों से देखी हैं। और फिर आगे जाके व्हेन आई वाज अराउंड 11 एंड 9, आई थिंक द मोर डिफिनिटिव ट्रिप्स हैपेंड, लाइक 1989 की ट्रिप है जब मैं 11 साल का था, जापान एवरीबॉडी जब कैन आप डू गए? इट। हाँ, the 89 trip was just mind blowing, mind boggling. That was like truly life changing sort of. But उससे पहले अब मैं दिस इज तस्वीरें, व्हेन यू वर 11? yeah, 11 was like, मुझे अच्छी तरह याद है because my brother was born, he was 3 and our parents left us in Tokyo inside a video game arcade. They're like, हम दे जा रहे हैं। लेफ्ट यू? No, they left us. So they, I was responsible enough. So my parents said कि हम जरा जा रहे हैं। मैंने कहा कितनी देर में आएंगे? उनका पता नहीं, 2 3 घंटे भी हो सकते हैं। मैंने कहा 2 3 घंटे, सो हमें काफी पैसे चाहिए होंगे, राइट? सो माय just parents gave me so many yen, and it's a child's crazy dream if you're into it, if you're into video games, that you've been left inside a video game arcade in Japan under supervision। और 89 में काफी, you like यहाँ से बाहर नहीं जाना, हाँ, and they're probably वो eating, जमाने अच्छे थे वो उसमें। जमाने बड़े अच्छे थे। हाँ दे प्रॉब्ली ईटिंग इन द नेक्स्ट रेस्टोरेंट, हाँ। बट हम लोग को समझ नहीं आया, हमें नजर आया पैसे हैं। आई वाज लाइक माय ब्रदर वाज देयर, आई वाज जस्ट होल्डिंग हिज हैंड, टेकिंग हिम अराउंड। सो दैट एंडेड अप बीइंग अ वेरी वेरी मैजिकल ट्रिप। एंड आई डोंट नो कितने मुल्क देखे, लेकिन रफ आइडिया आई थिंक 15 से 25, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे भी होते हैं कि आप रुके और चले हाँ गए। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में, अब कहीं जगह मैं गया हुआ हूँ, गोद में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे हाँ। कुछ नहीं याद। मॉरिशस, 15 से 25 मुल्क भी। it is weird because it's there somewhere inside you, हाँ अब once somebody to my mom told me कि हम एक दफा समुंदर से गए थे जहाँ बर्फ जमी हुई थी, अब मुझे याद ही नहीं। फिर आगे जाके मैंने वो तस्वीर देखी है वो। सो sometimes you actually remember your हम्म, memories, other times you're kind of fooling हम्म। yourself, by looking at a picture that maybe I'm remembering this, but there is a lot of layers in there। but I mean Japan देखा, अमेरिका देखा, ग्रीस थोड़ी देर के लिए देखा, यूरोप नहीं देखा ऑडली, बट काफी मलेशिया गए। और उस वक्त गए कि आपको समझ नहीं आता था कि इस एक्सपीरियंस से करना क्या है। हम्म। इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। हम्म। फिर आप घूम फिर के स्कूल जाते थे, हम्म। फिर एकदम से योर टीचर्स वुड आस्क यू कि व्हाट डिड यू डू इन द समर हॉलीडेज, सो यू जस्ट रेज योर हैंड लाइक सम प्रिविलेज्ड बॉय, even though we lived in PCHS। so like हाँ हम जापान गए गर्मियों से, all the kids are like कौन है ये बंदा, you know so it was quite unique। it was definitely very special। I should compare it to pilots children, हम्म। so they would travel a lot on tickets, हाँ but then there was no relatability there because they would be flying and merchant navy वालों का जरा visceral experience होता हाँ। था कि वो जहाज पोर्ट में लग रहा है। असल में वो सारी चीज मैजिकल होती है कि आप जब पोर्ट में आते हैं तो जहाज पूरा, वो फिर टग बोट्स आती हैं, वो जहाज को पार्क करने का पूरा जो सिस्टम है, व्हेन यू गेट इनसाइड अ पोर्ट, हम्म। दैट स्टफ इज मैडनेस। एज अ चाइल्ड इट फ्रीक्स यू आउट। बट आपने ये भी बोला कि बिकॉज you spent so many days and weeks and months out in the ocean, या और क्योंकि समंदर हर रोज एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता है, that really like visually या that changed you। इट डिड एंड इट डिड इट डिड आपने ये बात कही कि जो आपका सिनेमा की तरफ रुझान गया या जो एक सिनेमैटिक विजन आया, वो तब उस वजह से आया। आई मीन देखिए, इन द एंड हम सारा एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी का भी ब्रिंग टू बेयर अपॉन वट एवर वी ट्राइंग टू डू। अगर मैं या आपसे पूछूं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं आज amongst all your other talents, did your studies help or did so you know in the end एक इंसान अपने सारे एक्सपीरियंस को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। लेकिन इतना जरूर था कि आई वाज इनटू ड्राइंग एंड आई वाज इनटू पेंटिंग एंड आई वाज विजुअली, या माय विजुअल एक्यूटी वाज हाई। मतलब मेरी कंडीशनिंग थी कि अरे देखो, समुंदर है, ये है, वो है। यू सो वर अवेयर। I was very aware. I was always playing with the binoculars. Like, having free range with binoculars itself is madness. हम्म। इतनी बड़ी आपको दूरबीन मिल जाए और आप 3 घंटे के लिए, किसी को जरूरत नहीं है तो आप हर हर जगह जा जाके देख रहे हैं। आप कभी भागते हुए आ रहे हैं कि वो मैंने वेल की वो स्प्रे देख लिया। इट्स क्वाइट क्रेजी। So yeah, I later on I definitely feel it's contributing to my visual awareness cinematic thing, but I think it's also my real connection to nature because after that and all the student years and everything, हम भी फंसे सबकी तरह एक सीमेंट लाइफ में, you know
your father once told you when you told him that you wanted to be in the merchant navy, Yeah. and he said कि हमने बेटा इतना काम किया है ताकि आप वो करें जो आप genuinely करना Yeah, yeah. What a statement. I mean, it sounds like my father was always dropping gems, which I want to say he was, but like a regular father. You know, when I lost him, when we lost him, तो होता वही है फिर आप you're remembering your loved one. आप सारी memories access कर रहे हैं, आप वो जो वक्त गुजारते हैं आप उसको देख रहे होते हैं. So yes, you know, those were one of those things that when I occasionally posed a question to my father, which was not often, you know. I mean, मैं अपना सोचो में गुम रहता था जरा, लेकिन फिर obviously जब काम की बात आती तो then you're relying, Yeah. you're looking for some kind of guidance. So when he told me that, I just remember as a child, as a teen, early teen, I just was very confused because it didn't feel bad. It felt like he's told me a good thing, but मुझे इसका भी अंदाजा हुआ कि उन्होंने मुझे एक तरह से बताया कि जरूरत नहीं है तुम्हें ये करने की, लेकिन मना भी नहीं किया. तो मुझे मुझे अभी तक याद है कि मुझे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मिली थी जो मुझे 2-3 लगे देन एटलीस्ट कि अगर आप सबकॉन्शियसली ये सोच रहे थे क्योंकि अब्बा ये कर रहे हैं तो मैं ये करूं, हाँ, या मुझे ये करना चाहिए, तो वो बिल्कुल. आपका एक क्लियर आउट हो गया. वो क्लियर आउट हो गया और मतलब लेकिन उसमें फिर भी काफी कंफ्यूजन थी कि हम ऑब्लिगेटेड, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट हम ऑब्लिगेटेड भी थोड़ा समझते हैं ना इस बात को कि यार अब्बा जो कर रहे हैं वो हमें करना हाँ, है. शुक्र है मैं इतना ज्यादा उस तरह नहीं था. लेकिन अर्ली टीन्स में एकदम से आपको जरा वो दिल चाहता है कि यू वांट टू नो, you want to at least. I think it started happening to me at 13 14, I think. Like I just wanted that direction. Like I love too many things also. My interests were quite varied. तो वो एक अजीब सा लगता था कि वहाँ साइंस फिक्शन पसंद है, वहाँ गाड़ियाँ पसंद है, वहाँ इंजीनियरिंग. इट्स अ टेस्टमेंट कि अम्मा अब्बा ने उस अब तो सब बच्चे इसी तरह पलते हैं, राइट? उस वक्त You were 11 when you got a TV and VCR in your room. Yeah, man. Now that is again genius. I can't thank my parents enough for it. I can't. 14 इंच का टीवी था और एक VCP था. VCR बाहर था, तो वो हमें स्टेटस को समझ आ जाता था कि VCR अम्मा अब्बा का है, VCP हमारा है. हालांकि कोई रेलेवेंस नहीं है. बाद में हम कार्टून VCR पे रिकॉर्ड करते थे NTM से. जब NTM पे आते थे तो जस्ट मी एंड लेटर माय ब्रदर आल्सो ऑलवेज इनटू रिकॉर्डिंग. पता नहीं क्या शौक था, रिकॉर्ड कर लो हर चीज, यू नो. बट या वी हैड मेरे पास टीवी था छोटा और VCP था जो उस वक्त मुझे छोटा नहीं लगता था, ऐसे करके कमरे में होता था. एंड आई हैड वेरी फ्री रेन इन टर्म्स ऑफ. उस जमाने में PCHS में 2-3 वीडियो रेंटल शॉप्स होती थी और सारी क्लासी थी. मैं पढ़े लिखे बॉयज जो पढ़ रहे हैं वो होते थे और वहाँ पे बुकलेट्स होती थी. आप अपने पेरेंट के साथ जाते थे. मुझे नाम भी एक आध याद है. I remember Shirazi, there was one guy called Shirazi. He was amazing. So I was always used to ask Shirazi, Shirazi, कोई thriller, कोई ये वो sci-fi दे दें. And then there would be a look exchange between him and my mother right at the end. Is it okay? You're like, हाँ बिल्कुल best. So there was the parental guidance of what you're watching. The nazar was the parental guidance. The nazar was the parental guidance. And then sometimes you'd like take a horror movie and my mother would be like, look at me and be like, तो मतलब पाकिस्तान में ये तो होता है थोड़ा बहुत. So it was amazing that my parents trusted me that way, and of course we loved it. Like हमें शौक था बहुत.